मैं डिस्कनेक्ट हो जाऊं तो आप लोगों ने जो है थोड़ा सा वो करना है, मुझे कॉल करके बताना है कि आप डिस्कनेक्ट हो गए हैं, ताकि आपको टाइमली जो है आप मुझे इन्फॉर्म करें और फिर जो है हम थोड़ा सा पॉज करें या मसला ना हो। आप में से कोई स्क्रीन वीडियो शेयर वो कर सकता है, रिकॉर्ड कर सकता है? स्क्रीन वीडियो रिकॉर्डिंग जो ऑनलाइन है, इसमें से कोई अगर, अच्छा चले आप रिकॉर्ड कर ले, मेहरबानी होगी। फिर ये है कि बाकी साथी जो आज ज्वाइन ना कर सके तो उनके साथ फिर शेयर कर लेंगे ग्रुप में। ठीक है, थैंक यू। ओके, तो हमारा जो है हमने अभी तो हमने रन अप शुरू कर दिया, लेकिन प्रिसिपिटेशन या रेनफॉल जो कि जिसको हम इनपुट टू द प्रिसिपिटेशन कहते हैं, और एक हमारे पास जो आउटपुट होता है जो कि रन अप अभी हमने शुरू किया है, लास्ट क्लास में हमने थोड़ा बहुत, तो इसके दरमियान में एक चीज़ जो है वो रह गई थी, जो कि है लॉसेस फ्रॉम प्रिसिपिटेशन। जब भी बारिश होती है, आप लोगों को पता है, आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि जब भी बारिश होती है तो वो उसमें से कुछ पानी जो है वो लॉस्ट हो जाता है, सारा का सारा जो है वो रन ऑफ में कन्वर्ट नहीं होता। तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि रन ऑफ में मतलब जो कि लॉसेस जिसकी वजह से पानी लॉस्ट होता है, तो वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। वैसे तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं, लेकिन हम यहाँ पे जो है मेनली जो हमारे सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स में ज़्यादातर यूज़ होते हैं उस पे फोकस करेंगे। लेकिन इनिशियल जो मेरा वो है वो जो ओवरऑल जितनी भी ये हैं उस पे हम थोड़ी बहुत डिस्कशन करेंगे, और उसके बाद हम फिर इन्फिल्ट्रेशन और एवापोरेशन पे इंशाल्लाह आएंगे। सबसे पहले जो हमारे पास होता है वो है इंटरसेप्शन फ्रॉम द प्रिसिपिटेशन। तो इंटरसेप्शन जैसा कि नाम से जाहिर है, इसकी मीनिंग से जाहिर है कि द वाटर दैट इज बीइंग इंटरसेप्टेड फ्रॉम द रेनफॉल। तो इस वजह से जो है हमारे पास मतलब ये कि जब बारिश होती है तो बारिश का सारा पानी जो है वो जमीन पे डायरेक्टली नहीं गिरता, बल्कि बीच में जो है कुछ पानी जो है वो इंटरसेप्ट हो जाता है, स्पेशली लीव्स ऑफ द प्लांट्स की वजह से, ट्रीज की वजह से, वेजिटेशन की वजह से, क्रॉप्स की वजह से। और इसकी मिसाल ये है कि आप लोगों ने देखा होगा कि जब बारिश शुरू होती है तो इनिशियली जो है यू कैन टेक शेल्टर अंडर द ट्री फ्रॉम द रेनफॉल। और सेकंड एग्जांपल ये है कि आपके घर में अगर कोई ट्री या वेजिटेशन है, जो इनिशियली जो है उसके सराउंडिंग में जो खाली जगह है वो वेट हो जाती है बारिश की वजह से, लेकिन अंडर द प्लांट जो जगह होती है वो दैट रिमेन ड्राई। तो ये जो है ये एक्चुअली क्या होता है कि सम ऑफ द वाटर इज बीइंग इंटरसेप्टेड बाय लीव्स ऑफ द प्लांट्स, और जिसकी वजह से जो है वो पानी को जो है वो मतलब गिरने नहीं देता, नीचे जो है वो आने नहीं देता, तो उसको हम कहते हैं इंटरसेप्शन लॉस। अभी ये जितनी भी इनफिल्ट्रेशन और इवापो ट्रांसपिरेशन के अलावा जितनी भी चीजें मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, इन सब के लिए जो है कोई फार्मूला नहीं है। इसके लिए जो है बस सिर्फ अप्रोक्सीमेशन है, कुछ परसेंटेजेस में है, कुछ के लिए कुछ रेंजेस जो है लोगों ने डेवलप किए हैं। तो वो जो है मतलब उसका एग्जैक्ट कैलकुलेशन जो है दैट इज नॉट पॉसिबल। लेकिन अगर किसी जगह पे जो है आप एनालिसिस कर रहे हैं एंड यू फील that there are number of the density of the trees is more, forestation is more, and there are more chances of intercepting water from the from becoming runoff, तो देन यू शुड टेक दैट इनटू अकाउंट। तो इस वजह से फॉर एग्जांपल अगर आप, मैं आपको सिंपल एग्जांपल दूंगा, अगर आप फॉर एग्जांपल पिशावर यूनिवर्सिटी या यूनिवर्सिटी की जो प्रेमिसेस हैं इसको और हैदराबाद को अगर आप कंपेयर कर लें, तो हैदराबाद में जो है कि कोई एक हाथ जो है ट्री आपको नजर आएगी, जो तातारा पार्क हो गया, बाग नारायण हो गया, या इसमें। लेकिन अगर आप यूनिवर्सिटी में देखें तो नंबर ऑफ ट्रीज जो है वो ज्यादा है।
تو مطلب یہ کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان حیات آباد we can ignore the interception losses, but in university we should take into consideration the interception losses. اس کے کچھ فیکٹرز ہیں جس پہ وہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، وہ ہم ڈسکس کریں گے. تو انٹرسیپشن ہو گیا، سرفیس اسٹوریج اینڈ ڈیٹینشن اسٹوریج، بینک اسٹوریج، ایواپوریشن، ٹرانسپیریشن اینڈ انفلٹریشن. اچھا، ایبسٹریکشن کیا ہے؟ ایبسٹریکشن اینی تھنگ دیٹ از بینگ سبٹریکٹیڈ فرام دا رین فال and the output will be the runoff. So at the end you can see the formula. The rainfall excess is equal to total rainfall minus abstraction. تو یہ ایکسیس رین فال جو ہے میں نے آپ کو پچھلے کلاس میں بتایا بھی تھا کہ اس کو ہم نیٹ رین فال بھی کہتے ہیں، اس کو ہم افیکٹو رین فال بھی کہتے ہیں، اس کو ہم رن آف بھی کہتے ہیں. سو ٹوٹل رین فال مائنس ایبسٹریکشن جو ہے وہ ہمارے پاس جو ہے رن آف کے برابر ہوگا. تو انٹرسیپشن جو ہے، انٹرسیپشن رن آف پروسیس جو ہے کب شروع ہوتا ہے؟ تو یہاں پہ ایکسپلین کیا گیا ہے کہ جب بھی ہمارے پاس جو ہے انٹرسیپشن ہو جاتی ہے، بینک اسٹوریج اور سرفیس اسٹوریج اور ڈیٹینشن اسٹوریج اور انفلٹریشن ایواپوریشن کی ریکوائرمنٹ پوری ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد جو ہے رن اپ جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے رین فال. تو رین فال اور رن اپ کے درمیان یہ وقفہ ہوتا ہے کہ رن اپ جو ہے، ہاں اگر آپ کے پاس رین فال جو ہے مطلب بہت تیزی کے ساتھ شروع ہو اور ایسا لینڈ یوز ہو کہ وہاں پہ کوئی لاسز کے چانسز نہ ہو، تو اٹ کین اسٹارٹ انسٹنٹینیسلی. لیکن نارملی جو ہے اس طرح نہیں ہوتا، اٹ ٹیک سم ٹائم. سو انٹرسیپشن جو ہے اٹ ڈیپینڈس آن نمبر ون اسٹارم کیریکٹر. اسٹارم کیریکٹر مین ٹائپ آف رین فال. Type of rainfall. If we have low intensity rainfall, so then the chances of interception will be more. But if we have more high intensity rainfall, so then the leaves of the plants will not be able to hold the water, and interception losses will be minimal. And you may have experienced that کہ تیز بارش میں جو ہے ایون انڈر دا ٹری جو ہے وہ جلدی بارش کا پانی آ جاتا ہے اور زیادہ دیر بارش ہوگی تو انیشلی بعد جو ہے لگے گا، بلکہ پانی جو ہے وہ نیچے کی طرف جو ہے وہ آنا شروع ہو جائے گا. سیکنڈ جو فیکٹر ہے which is affecting interception, that is the type, extent and density of vegetative cover. سو ڈینسٹی، اس کے علاوہ ایک اور چیز بھی ہے جس کو ہم کینوپی بھی کہتے ہیں. کینوپی جو ہے یہ ایکچولی ٹریز کے پھیلاؤ کو کہتے ہیں کہ وہ اس کا ٹاپ جو ہے وہ کتنا پھیلا ہوا ہے، آیا وہ نیرو اور ہائی ہے یا وہ لو ہائٹ اور زیادہ اس کا پھیلاؤ ہے. تو اگر کینوپی زیادہ ہے تو ظاہری بات ہے اس میں زیادہ انٹرسیپشن کے چانسز ہوں گے. اور اگر سرو کا درخت آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ وہ نارملی نیرو اور ٹال ہوتا ہے تو وہاں پہ چانسز جو ہے وہ ریلیٹیولی کم ہوں گے. ڈینسٹی آف ویجیٹیو کور، ڈینسٹی مین نمبر آف پلانٹس پر یونٹ ایریا، تو وہ اگر زیادہ ہیں تو اوبیسلی انٹرسیپشن زیادہ ہوگی، اگر کم ہے تو وہ کم ہوگی. ایکسٹینٹ آف دا ویجیٹیو کور، تو کینوپی جو میں نے آپ کو بتا دیا. اس طرح ایون جو ٹائپ آف لیوز جو ہے دیٹ از آلسو افیکٹنگ. اگر لیوز آف دا پلانٹس آپ کے پاس جو ہے تhin ہے، نیرو ہے، تو وہ زیادہ پانی کو ہولڈ نہیں کر سکیں گے، اور اگر وہ فلیٹر ہے so that may hold more water. So these are some factors which will be affecting the interception loss. Time of the year. So for example, if you are in the autumn season, so barely you will see any leaves in the plants. So the chances of interception will be low. But if you are in the spring season, so normally we have very dense vegetation with more leaves. So then there will be obviously the chances of interception will be more. So how you will decide about the time of the year? As I told you in the previous class, that once you have taken the peak rainfall event, you have selected from the historical record. So you will know the date and time of that rainfall event. So then you will see that whether it was in the autumn season or in the spring season, in summer season or winter season. So accordingly, you can decide about
the interception characteristics. And wind speed. So even if all the three previous parameters are favoring interception, but if the wind is blowing during the rainfall, so there will be no chances of any interception, because it will shake the tree, it will shake the leaves of the plants, and it will not be capable of holding any water. So these are some factors. Now, how to find out the value of interception? So on per storm basis, interception storage may range from 10 millimeter for dense forested vegetation, but is generally considerably less than this for a mixed cover catchment. मतलब ये कि अगर बहुत ज़्यादा dense vegetation है, so you can take it as maximum as 0.4 inches. But if mix है मतलब in some area is urban area, in some area you have forestation, vegetation, so then it can be smaller than that. This is one criteria. For light storm are substantially obstructed by the interception process. So, according to one of the researcher, it can be as much as 25% of the average annual precipitation. Average annual precipitation, we know the past 30 years annual precipitation. So average annual precipitation, तो उसका 25%, तो वो अगर for example 100 millimeter है, so then it can be as much as 25 millimeter. तो वो जो है वो हो सकता है, but if there is light storm, but if there is heavy storm, moderate storm, so it can be 7 to 36% uh, greater during the growing season and smaller at the other times of the year. So 3 to 22% of the total precipitation आप इसको ले सकते हैं. तो ये different आपके लिए मतलब criteria है. बाकी ultimately you have to decide at the spot that what are the conditions of the engagement, what are the conditions of the vegetation, and what are the condition of the storm, and then you have to decide. For heavy storm, interception losses usually amount to a very smaller fraction, and in certain cases, the neglect of interception is generally justified on practical ground. तो इस तरह के मैंने आपको एग्जांपल दी. If the number of vegetation, if you feel that is very much smaller and the rainfall is heavy, so there you can neglect interception loss. Or even if you have selected the rainfall event, and during that, from the historical record, it was found that the wind was blowing, so obviously then you can ignore the interception losses. Then surface storage and detention storage, there is slight difference between the detention storage and surface storage. So, but both are non-measurable. Though both are non-measurable because detention storage. So actually, ये निकला है detention से, detaining water. So actually, you may have seen कि आपका कि घर का सरफेस जो है, जो barren land होता है, वो normally smooth नहीं होता. उसमें छोटे छोटे undulations होते हैं. तो जब रेनफॉल शुरू हो जाता है तो वो एब्रप्टली जो है वो रन स्टार्ट नहीं होता, बल्कि वो छोटे छोटे पेट्स जो होते हैं, बाय पेट्स आई मीन वेरी स्मॉल पेट्स, तो वो जो है वो पानी को थोड़ा सा रोके रखता है. लेकिन वंस द रन अप गेट स्टार्टेड, इट बिकम पार्ट ऑफ द रन अप. तो इस वजह से जो है इसको डिटेंशन स्टोरेज कहते हैं कि वो रन अप को लॉस नहीं है, बल्कि रन अप को थोड़ा सा डिले कर देता है, मे बी फ्यू सेकंड्स, मे बी मिनट्स, डिपेंड करता है कि वो अंडुलेशंस कितनी है. और आप लोगों ने देखा होगा कि जब तेज बारिश हो जाती है तो उसके बाद वो जो तो अंडुलेटेड लैंड होता है थोड़ा बहुत, वो आपके पास बिल्कुल स्मूथ बन जाता है. तो इट मीन्स कि वो डिटेंशन थोड़ा सा उन्होंने डिटेन तो किया होता है, लेकिन वो फिर जो है रन अप का पार्ट बन जाता है. एंड फिर उसको वो उसको जो एक्चुअली इसको लॉस हम नहीं कहते, बल्कि इसको हम डिले कहते हैं. और सरफेस स्टोरेज जो है, तो उसमें वो पेट्स जो है उसकी मैग्नीट्यूड जो है या डेप्थ जो है वो रिलेटिवली जो है वो ज़्यादा हो डिटेंशन स्टोरेज के मुकाबले में. तो अगर थोड़ा ज़्यादा है तो उसमें फिर ये होगा कि मतलब रन ऑफ बारिश रुकने के बाद, रन ऑफ स्टॉपेज के बाद भी वो पिट्स इतने होते हैं कि उसमें थोड़ा सा पानी जो है वो खड़ा रहता है, लेकिन वो मेजरेबल नहीं होता.
تو وہ یا تو ٹائم کے ساتھ ساتھ انفلٹریٹ ہو جاتا ہے یا پھر ایواپوریٹ ہو جاتا ہے. تو یہ سرفیس اسٹوریج ہے. So actual measurements of surface storage and detention are extremely difficult to make and consequently are practically non-existent. But if you want that the surface is not smooth and there are some chances of surface storages, تو یہ آپ کے لیے جو ہے ایک ریکمینڈیڈ ویلیو ہے. اور یہ ویلیو جو ہے رائٹ اینڈ میکلان انجینئرز 1969 کے پیپر سے لی گئی ہے. تو اس ریفرنس کو یوز کر کے آپ پیورڈ ایریا کے لیے، روف ٹاپ کے لیے، سلوپنگ روف کے لیے، اس طرح لانس کے لیے، ووڈڈ ایریا کے لیے، اوپن فیلڈ کے لیے یہ رینج گیون ہے. اور لاسٹ کالم میں جو ہے ریکمینڈیڈ ویلیو جو ہے وہ آپ وہ لے سکتے ہیں اف یو وانٹ ٹو ٹیک دیٹ. لیکن اگر آپ لیں گے تو آپ تھوڑا سا جو ہے وہ رسکی سائڈ پہ جائیں گے، کیونکہ آپ رن اپ کو ڈیکریز کریں گے جب یہ سبٹریٹ کریں گے. جب رن اپ ڈیکریز ہوگا تو آپ کا جو ہے وہ ویلیو جو ہے اگر اس میں تھوڑی بھی غلطی ہوگی تو انڈر اسٹیمیشن ہو سکتی ہے. تو اس وجہ سے جو ہے نارملی ہم آسانی کے لیے بس کہتے ہیں چھوڑو، بس اس کو کیلکولیٹ نہ کرو، تو آپ کے پاس آلریڈی رن اپ جو ہے وہ زیادہ ہو جائے گا. تو اگر تھوڑا بہت جو ہے وہ اس میں فیکٹر آف سیفٹی جو ہے وہ آ جاتا ہے. Otherwise, if you want to have accurate calculation, you can use this table. Bank storage جو ہے that is related to the streams. The streams, so when the site, for example, this is the, let's say this is the stream, and these are the banks. Now, before the rain starts, let's say this is the water level, right? And this is the water level. Now, when the rainfall starts and the runoff contribute to the stream, so the water level may reach to this height. Now, initially, the phreatic line in the soil will be like this. This will be your saturated line. But when the flood level rises, what will happen? The water will, as you know, that the water move from the high pressure zone to the low pressure zone. So the water will infiltrate into the side, into the bank of the, let's say this is one bank and this is another bank. But this water will remain here in the banks because normally the floods or the high runoff is taking place for smaller time. So when this fall down, this is the water level. When the rainfall stops, the runoff reduces. This water level will come back to the original position, to this position again. When it comes to this position, now here the concentration of water will be more as compared to this one. So this water will come back to the stream like this. So since the water is being stored here in the bank for shorter period of time, that is why it is called bank storage.